no doubt at all. The final day of the pink ball test between India and Sri Lanka in Bangalore. अगर आप फिर से यहाँ जुड़े हैं तो आपका स्वागत है, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, वेलकम, थैंक यू। एंड जैसा कि आपने देखा होगा जब मैंने इस when I premiered this video earlier a few hours ago, टॉपिक है कि रोहित शर्मा का फॉर्म। अब हम सब जानते हैं कि रोहित शर्मा अभी इस टीम के फ़ोन का अपडेट आ रहा है दूसरे फ़ोन पे, इस टीम के कप्तान हैं तीनों फॉर्मेट्स में, दैट इज़ वनडे, टेस्ट एंड T20 कैप्टन। चेतन शर्मा, चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स, सेड लास्ट मंथ दैट रोहित शर्मा इज़ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, क्योंकि आप देखिए एक्सपीरियंस है, अनुभवी खिलाड़ी हैं। He's got runs across the world, across formats. He's an opener. He opens in all three formats. And now he's the captain also in all three formats. So I get where the comment from Chetan Sharma sahab came. But विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद टीम को एक ऐसी शख्स, ऐसा लीडर की ज़रूरत थी जो फॉर ऑल द थिंग्स आई जस्ट अंडरलाइंड, समवन हु इज एक्सपीरियंस, समवन हु कमांड्स रिस्पेक्ट। और मेरे हिसाब से, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल आल्सो एग्री, उस ड्रेसिंग रूम में कोई रोहित शर्मा से बड़ा कोई नाम नहीं विराट कोहली के बाद। अब जो है Rohit Sharma has now taken over captaincy in all three formats. We've seen it's been a very easy first run because वेस्ट इंडीज़ आई, इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को 3-0 हराया। वनडेज में, T20s में श्रीलंका आई, बीट देम वेरी वेरी इजीली इन द T20s 3-0, एंड नाउ 2 टेस्ट मैचेस। एक मैच तो एक इनिंग्स और 222 रन से जीता इंडिया मोहाली में। और अब जैसे कि हम देख सकते हैं बेंगलोर टेस्ट में, पिंक बॉल टेस्ट में, ये मैच भी आज खत्म हो जाएगा। एंड दिस विल देन गिव रोहित शर्मा as full-time captain, not what happened before in the Asia Cup and when he was leading India a couple times जब विराट कोहली rested थे, but as permanent captain of India, this will take रोहित शर्मा's record to 11-0। मतलब वो हारे नहीं अब तक जब से वो फुल टाइम कप्तान बने। सारे मैच जो हैं घर पे खेले गए, काफ़ी एवरेज या मैं कहूँगा फर्जी टीम के साथ ही हुआ है। बट जो मेरे लिए एक थोड़ा सा वर्सम पॉइंट है कि इन 11 मैचेस में रोहित शर्मा ने, मैं आपको इनके आंकड़े दिखाऊंगा अक्रॉस फॉर्मेट्स, टेस्ट, वनडे एंड T20, 11 मैचेस, 12 पारी, 284 runs and an average of 23.66 with just the 150। आपको बता दूं कि that 50 came in the first match, the first ODI back in February, 6 फरवरी को, जब रोहित ने 60 रन बनाए। उसके बाद इनके स्कोर्स 5, 13, 40, 19, 7, 44, 1, 5, 29 and 15. As I said, early days yet in Rohit Sharma's captaincy, but the question is being asked on a couple other shows I saw. वसीम जाफर ने भी इस बारे में अपने व्यूज शेयर किए कि क्या दबाव आ रहा है रोहित शर्मा पे कैप्टन बनने का, बिकॉज he does not generally go this long across formats without getting a score, and it's also the way he's been getting out. Some familiar problems have come back, getting caught at fine leg, getting caught at long leg, playing attacking shots just when getting sets. मैं यहाँ पर टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ। रोहित, जितना मैं जानता हूँ उन्हें, जितना मैं उन्हें देख चुका हूँ, वो कभी ये नहीं मानेंगे कि कप्तानी से कुछ प्रभाव आया है उनकी बैटिंग पे, because he's a very carefree, he's very assured in what he does. But you have to start wondering, when a batsman of his skill starts getting out to familiar ways, is perhaps the captaincy weighing in on him? Is he perhaps not playing as freely, and then after getting bogged down, does he then try to break out of his shell with those shots? I frankly do not know. मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग की राय क्या है इस बात पे। कुछ कमेंट्स आए हैं क्या रोहित को लेके? लेट्स देखते हैं। फिलहाल तो हेलो आए, हेलो मणिकांत, हेलो हार्दिक भाई, रसिक सानी, बिफोर टी और डिनर जेमी, लेट्स हैव अ फ्रेंडली बेट इफ वी डिसएग्री। अच्छा, आप आज के मैच के बारे में बात कर रहे हैं, डे 3, आप कह रहे हैं बिफोर डिनर, ऑल्दो आई एम टेकिंग अ ह्यूज रिस्क, दे मे कोलैप्स इन द फर्स्ट सेशन। Yes, Rasik Sani, I also think that there's a high probability that the Sri Lankan team will collapse in the first session. But let's hope that there's a bit of a fight. We all know कि ये मैच जो है आज ही खत्म होगा. But a bet before tea or dinner, I'm going to say in the second session, between after the tea break and before the dinner break, वो जो एक second session आएगा, I think it'll happen then. Will they lose? Will they lose 9 wickets in a session? मुश्किल है, but because you asked for a friendly wager, I'm going to say second session.
और कुछ सवाल आए हैं यहाँ पे। हाँ, मानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल टाइम है, सब लोग या तो काम पे होंगे या फिर लंच ब्रेक पे होंगे, बट शाम को फिर मैं भी बिजी हो जाता हूँ, तो आई सेड लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो हाँ, रोहित शर्मा, लाइक आई सेड, एन एवरेज ऑफ 23.44, 23.6 जो भी था, नॉट अ गुड एवरेज फॉर समवन who's had a terrific start to his captaincy tenure. Also he's got to face some, let's say, rather friendly bowling. तो उस फ्रेंडली बॉलिंग के सामने जब और बैट्समैन रन रन मार पा रहे हैं, Rohit Sharma has not sort of lived up to what we expect him to do. But like I said, very early days, बहुत बहुत आगे जाने वाली है इनकी गाड़ी टीम के साथ. He has to lead them in the T20 World Cup this year. He has to lead them in the ongoing WTC Test cycle 21 to 23, and then next year there's a home World Cup. And we've seen with players like Rohit, with players like Virat Kohli, after a lean phase, they do tend to bounce back. But it's just somewhat worrying कि given the fact that अभी ये टीम टेस्ट की अगर हम बात करें, अभी ट्रांजिशन फेज में है, अभी हाल ही में रहाणे और पुजारा को, दो सीनियर प्लेयर्स को बाहर किया गया टीम से. मयंक अग्रवाल का फॉर्म काफ़ी ख़राब चल रहा है. ऋषभ पंत इज़ ऑफ कोर्स, आई मीन, he's dependable, but he's also a maverick player. केएल राहुल अभी यहाँ पे नहीं है. श्रेयस अय्यर अपना तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं. हनुमा विहारी बहुत टाइम के बाद, साल के बाद से वापसी कर रहे हैं इस सीरीज में. तो you just thought कि perhaps Rohit would get the bigger runs, the runs which would make it easier on the batsman to follow. फिलहाल नहीं हुआ है अगर हम टेस्ट मैच की बात करें. But even in the one days and the T20s, like I was saying, against the West Indies and Sri Lanka, he didn't get the big runs, but he was also he was contributing those 20s and 40s into big starts. We saw Ishan Kishan firing at the other end. So it was not like Rohit was not helping the team. But when you go 11 matches with just 150, जायज़ सवाल है कि क्या इनकी कप्तानी के चलते कुछ प्रभाव आया है बैटिंग में. हैज़ हिज माइंड सेट चेंज्ड? अगर हम इस मैच के बारे में बात करें, दैट इज़ अ पिंक बॉल टेस्ट. Just the way he was, feeling outside the off stump in the first innings, and then second innings he played that shot. He got a rare loose ball, and immediately Rohit pounced on it. And we saw the moment he hit the ball in the air down towards Matthews at long on, Rohit ने कहा आई यार, and you can tell कि he knew यार, फिर से मैं सेट हो गया, फिर से मुझे शुरुआत मिला, बट मैं उसको आगे नहीं ले जा पाया. Hopefully, Rohit has a good IPL, and then whenever India resume playing internationals, he gets back to form. But I just think somehow he's perhaps thinking too much, or he's more conscious, more self-aware कि अब मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, मुझे थोड़ा अलग अंदाज से खेलना चाहिए. I don't think so. I think just go back to play the way you were. रोहित ने जो वापसी करी टेस्ट क्रिकेट में 2020 में, 21 में, इतने जो शानदार रन उन्होंने बनाए बतौर ओपनर, मैं तो वही चाहूँगा, और आई एम श्योर आप भी सब यही चाहेंगे कि रोहित उसी अंदाज में खेले जैसे कि वी सॉ हिम प्ले एट होम लास्ट ईयर अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड देन इन इंग्लैंड एज वेल. रसिक सानी कह रहे हैं कोहली हैज टू स्कोर नाउ यार. Absolutely, it's disturbing now. It's absolutely disturbing. It was distressing to see you remark that Kohli is going to score 100 and Bangladesh don't want him to go the SRT way. I mean, look, we've seen Rasik कि कोहली के साथ कुछ तो हुआ है, वो जो ऑफ फील्ड प्रॉब्लम्स हैं, ज़रूर उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, उस पर दबाव आ चुका है. Perhaps he doesn't feel as happy anymore in the dressing room, which is why he stepped away from the test captaincy. He didn't feel as belonged or as wanted. He has the technical problems which have crept back in his game, chiefly against fast bowlers, poking away outside the off stump, something which he had done so blooming well to erase from his game. These have now crept back in, perhaps because of the lack of runs, perhaps because of the self-doubt, perhaps of trying to overcompensate by trying to go harder because he's a very attacking batsman by nature, as we've seen. पर दूसरी बात, जैसे कि मैं पहले से कह चुका हूँ इस शो पे, विराट कोहली जिस तरह से आउट हो रहे हैं स्पिनर्स पे वाइट बॉल में इन टेस्ट मैचेस में, that is alarming. I think something in his game has changed. I would discard this match, this pink ball test match, जहाँ पे उनको दोनों पारी में he got grubbers. Grubbers are the balls which stay very low. अगर हम पहली इनिंग्स की बारे में बात करें, धनंजय डिसिल्वा ने जो बॉल उनको डाला, that was not a wicket that went down to skill. That ball stayed very low. Again, I was surprised that Virat Kohli made the same mistake in the second innings. जब आपको मालूम है कि गेंद खासकर स्पिनर से इस बेंगलोर पिच पे जब छोटी पड़ेगी तो लो रहेगी. I was kind of surprised that he went back again, but overall, given the kind of balls, the kind of the way they stayed low, I would discard these two dismissals, Rasik. पर हाँ, overall कुछ तो गड़बड़ है विराट कोहली के साथ. अजय सिंह, जय भाई, क्या कैप्टनसी का हम इंडियंस की मेंटालिटी से कोई लेना देना है क्या? आप बाहर पॉन्टिंग, कुक्स, विलियमसन, रूडी से लोग देख पाते हैं.
मैं समझा नहीं आपका सवाल क्या है, क्या कैप्टनसी का हम इंडियंस की मेंटेलिटी से कोई अच्छा नहीं। देखिए, अगर आप क्रिकेट कप्तान हो तो ज़्यादातर वो आपके सराउंडिंग इन्फ्लुएंसेस, आपके वातावरण, वो उस पर डिपेंडेंट है। विराट कोहली हैज नेचुरली हैड टू फाइट फॉर अ लॉट, ही इज बीन थ्रू सो मच, सो आई थिंक ही जस्ट अ मोर अग्रेसिव, out there kind of captain, whereas Rohit Sharma is a bit more देखते हैं, let's see how it goes. That's not to say that he's lacking in intensity, but overall जो है he has a different way. बाकी Ponting, look, Ponting, I think Ponting was, yes, he was also very very aggressive, but Ponting also had a damn good team. I think Steve Waugh, Ricky Ponting, जब आपके पास ऐसे world beating teams है, हमारा जस्टिन लैंगर, हेडन, डेमियन मार्टिन, माइकल बेवन, साइमंस, और कौन था, वॉर्न, गिलेस्पी, गिलक्रिस्ट, जब आपके पास ऐसे प्लेयर हैं, ब्रेट ली, तो आपकी टीम अच्छी होगी. यू डोंट नीड टू डू मच टैक्टिकली. आई थिंक वेयर द क्रेडिट गोज टू विराट कोहली एंड रवि शास्त्री इज एक एवरेज या बिलो एवरेज टीम जो नंबर 6 पे थी रैंकिंग्स में, उस टीम में बदलाव लाना, उस टीम को 6 से नंबर 1 तक ले जाना और नंबर 1 रखना 4 साढ़े 4 साल तक. I think that says a lot about the environment in which Virat Kohli believed Test cricket should be played. बाकी हम जो रूट के बारे में बात करें, जो रूट द बैट्समैन आई थिंक इज फार बेटर देन जो रूट द कैप्टन. यू सी द लास्ट ईयर, इवन नाउ इंग्लैंड इज गोइंग थ्रू अ टेरिबल फेज, बट जो रूट इज स्कोरिंग रन. तो इसमें कितना मेंटालिटी की बात है, आई फ्रैंकली डोंट नो. आई थिंक कैप्टन्स, यू हैव टू बी अ नेचुरल लीडर. बाकी आप प्रोसेस के थ्रू आप सीखते हैं कप्तानी कैसे होती है. आई डोंट थिंक इट्स अ कल्चर, इट्स अ एशियन और अ वेस्टर्न वे ऑफ डूइंग थिंग्स. दैट्स माय ओपिनियन. हरदीप भाई कह रहे हैं जय भाई, पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल वापसी कर सकते हैं इंडियन टेस्ट टीम में. बिल्कुल, शुभमन गिल तो अभी भी स्क्वाड में है और मेरा ये मानना है कि अगर हनुमा विहारी से रन नहीं बनते अगले अगले 2-3 मैचेस में, जब भी इंडिया वापस टेस्ट मैच क्रिकेट खेलेगी, देन द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर मी इज शुभमन गिल. मुझे लगता है, मुझे कोई डाउट नहीं है इस बात का कि शुभमन गिल 3 पे या 4 पे बहुत बहुत लंबे साल तक खेलेंगे इंडिया के लिए. पृथ्वी शॉ का थोड़ा मुश्किल है बिकॉज आई थिंक कंपटीशन इतना है, वो जब तक रेड बॉल में रन नहीं मारेंगे उनका वापस आना मुश्किल है. बट युवा खिलाड़ी हैं, बहुत बहुत टैलेंटेड हैं. ही हैज years on his side, so absolutely they can come back. I have no doubt on that. Nikhil Sachin is saying why Kohli is not able to play long innings. He's getting 50s to capitalize. Is it form or luck factor? It's both. In this match, like I just said a few minutes ago, in this match, it is absolutely just bad luck that he got two balls that stayed very low and spun sharply. Overall, like I was just saying to Rasik, it's a combination of out of touch, self doubt, all the problems with Ganguly and the board and the team not feeling wanted. That's definitely 100% has a factor on Virat Kohli. He just needs to play that one innings, where it'll all fall into place. ऐसा नहीं कि वो खराब लगे. अक्सर जब वो आए क्रीज पे, अगर हम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात करें, because his form in one days has been good and his form in T20s has been very good. अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें जहां पे उनका सबसे खराब फॉर्म चला है, बहुत बहुत बार उन्हें 40s 50s 60s मिलाए, फिर वो आउट हुए. बहुत बार वो अपनी गलती से आउट हुए. Poking, we saw it in South Africa, we saw it in England, we saw it against England at home. He got to 70 odd, then he got bowled trying to attack Adil Rashid, got bowled trying to attack Moeen Ali. तो बात थोड़ी टेक्निकलिटी की भी है, पर ज़्यादातर मेंटालिटी है कि किस मेंटल स्पेस में, किस माइंडसेट से विराट कोहली खेल रहे हैं. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ ही गेट्स अ स्टार्ट एंड ही गोज इनटू अ टी ब्रेक और अ लंच ब्रेक, दैट ही कम्स आउट विद दैट सेम मेंटालिटी. आई थिंक ब्रेक के बाद अक्सर जो है बैट्समैन कहीं ना कहीं फोकस खो देते हैं, और हमने विराट कोहली के साथ ये भी देखा है. Rasik is saying guys like Ponting, Lara failed against Minos with one match against the best, which is why I would rate Kohli, Ponting, Lara more dangerous than Sachin. Sachin scored, India lost invariably. एक हद तक I will agree with you. Again, Sachin often had to bail the team out a lot of time when he did not have enough support. If you look at the mid 90s, the only consistently supportive batsman to Sachin Tendulkar was Mohammad Azharuddin. Brian Lara also had Jimmy Adams, Carl Hooper. So if the support around them was not that much. When Dravid came into his own in the late 90s, when Ganguly came into his own, then of course, then Sachin got the support. That's not to say that Sachin did not play against very fine attacks. I think he and Lara faced far better attacks. And the way that Sachin was able to dominate Shane Warne in his prime and also Glenn McGrath. So it's difficult to say. I think Virat Kohli scored some fantastic hundreds home and away. Is he in the same class as Sachin as a batsman? Absolutely not. Will he perhaps go on and get close to Sachin's run tally? Yes, but again,
different situations. I think Ponting was different. Ponting, Lara, Sachin, they raised their games against the better teams, and Virat Kohli has done that, but not as consistently as the three names you have just taken. If you look at Virat Kohli in England, England is a country where, by and large, teams and players are ranked by their success in England. Virat Kohli has had two terrible tours of England and only one good tour of England. So I think that's one area where he be feeling like, यार मुझे अगर उस लीग में होना चाहिए तो मैं वहाँ कहीं ना कहीं मैं फेल हो चुका हूँ. What we got? Hardik Parth, the Sama is saying, what do you make of the Iyer versus Sky battle? Looking at the T20, T2022 T20 World Cup, very, very, very close. 3 weeks ago, I would have said Sky is the front runner for the 11, but now the way that Shreyas Iyer's played, fantastic. But again, Shreyas Iyer was batting at number 3, जहाँ पे विराट कोहली नहीं थे. जब कोहली वापस आएंगे तो कोहली will bat at 3. And I think it's going to be very, very tough to leave out Sky at number 5. Is Iyer better at number 5? I don't know. I think Iyer's probably better suited at number 3, maximum 4, whereas Suryakumar Yadav has done the job at 5. So it's going to be very, 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 very difficult for the team to select, because I believe both are going to go to Australia. Iyer and Suryakumar Yadav will go to Australia. फिर कौन खेलता है वो डिपेंड करता है बाकी प्लेयर्स के फॉर्म और फिटनेस पे. ओके, अजय सिंह, जय भाई को इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्राई सीरीज की बात चल रही है, कितना सच कितना रूमर? आई थिंक इट्स नॉट अ रूमर. आई थिंक परहैप्स दिस आइडिया हैज बीन पुट फोर्थ, बट इसको सफल करने में बहुत सारे पार्टीज का हाथ है. I hope it happens, like I said the last time, because if you heard me on these streams, आप तो जानते हैं कि मैं कब से कह रहा हूँ कि bilateral one day series कम करो, ट्राई सीरीज क्वाड्रेंगुलर ज़्यादा लाओ. तो उस लिहाज से देखें तो बहुत बहुत अच्छी बात है. बट अगेन लॉजिस्टिक्स वेरी वेरी टफ, बिकॉज आउटसाइड ऑफ आईसीसी इवेंट्स इंडिया ने 15 साल से, ऑलमोस्ट 15 साल से, हाँ 2017 के एंड में इंडिया होस्टेड पाकिस्तान. ऑलमोस्ट 15 साल से दोस्तों बायलैटरल सीरीज आईसीसी इवेंट्स के बाहर इंडिया और पाकिस्तान कभी कोई सीरीज नहीं खेली है. सो एंड ऑफ कोर्स द एशिया कप. So will a try series happen between Australia, Pakistan, India? Very, very tricky, because the way the two governments are going right now, I just don't see it happening, but I hope it happens. Divesh, Rohit is throwing his wicket away. Only Bihari is the one who seems to play the whole and has better temperament. Rest are all throwing wickets. I mean, again, on these tracks, it's very, very difficult to survive. So only Iyer's and Rishabh Pant, who use their feet a lot more. I think Rohit and Kohli aren't using their feet as much to the spinners, which is why at least on these turning tracks you see them struggling. Overall, yes, Rohit has the same problem of just getting set and then throwing it away. Chalo, in T20 it's a lottery, you have to keep scoring. I wouldn't be too harsh there, but he had a good chance in the one days, did not get runs against West Indies except that 160, like I said. And in Test cricket, he's just not sure what to do right now. It seems to me that's the case with him right now. Abhay Bish is saying, JMI India had problem with left arm bowler. Absolutely. I've addressed this problem many times on this show as well as my other Gland show. And 2017 Champions Trophy, the match was lost because Mohammad Amir took 3 wickets in 3 different balls. Game was over there. 2019 semi-final, Trent Bolt came and took out Virat Kohli. And then last year in the T20 World Cup, Shaheen Shah Afridi came and totally screwed India's happiness. When you are not playing consistently accurate and quick left-arm pacers in your nets, as in they're not part of your squad, it becomes very hard to suddenly face an Amir or a Bolt or a Shaheen Shah Afridi in a knockout World Cup match. This is a huge problem for India. सिस्टम से नहीं आ रहे हैं, एक दो हैं, वो तेज नहीं है, वो फिट नहीं है. लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट इंडिया का बहुत सालों से प्रॉब्लम है और आगे भी रहेगा जब तक स्क्वाड में 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स, ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको खिलाइए, उनको स्क्वाड में लाइए. जब तक आपके बैट्समैन, आपके बल्लेबाज लेफ्ट आर्म पेस को रेगुलरली खेलेंगे नेट्स में, तब तक वो अच्छे हो जाएंगे. अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है किसी भी विश्व कप में ऐसे तेज गेंदबाजों के साथ मैच खेलना और मैच जीतना. Rasik saying, greatness is defined by the number of matches, especially in knockouts. Sachin, was he ever able to win a single final at Sharjah or an ICC event till 2011? Yes, he did. The Coca-Cola Cup, Rasik, he won India that must-win match on his own, and then in the very next match he got 100. So he has in fact won India two knockout matches, including a tournament on his own. Then 2008 में he got a 93 not out in the best of 3 tri series, the CB Cup, the CB Trophy in Australia. So it's not like he's not
done it. Sachin has, in fact, won several knockout matches for India on his own. There was another tri-series final in Sri Lanka when I was at the ground. I think he got 123 outstanding knock. So Sachin has, in fact, contributed a lot of big runs in knockout matches, especially in finals. So yes, I would disagree with you on that one. Manikant Sharma saying, do you know what came out of leaks from Pakistan? Is that they're making dead pitches because their board won't want their team. हाँ ये तो I said this in the last show. रमीज राजा ने ओपनली कहा कि हमें ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलर्स की थ्रेट को निगेट करने के लिए हमने ये पाटा ट्रैक्स बनाए. और दूसरी बात, हमारे जो ओपनर्स है इमाम उल हक वापसी कर रहे हैं टेस्ट मैच में. इनके पास रन्स नहीं है, इनके पास कोई शतक नहीं है. और जो दूसरा ओपनर है असदुल्ला शफीक, इनका भी फॉर्म खराब है. तो इन दोनों हमारे नए ओपनर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए हमने ऐसे फ्लैट ट्रैक्स बनाए. दिस इज द पीसीबी चेयरमैन सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड. तो आई डोंट नो अबाउट लीक्स एंड ऑल. इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दीज ट्रैक्स वर मेड टू गिव पाकिस्तान बैट्समैन द एडवांटेज, खासकर टॉप ऑर्डर, एज वेल एज टू निगेट द थ्रेट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज फास्ट बॉलर. सिंपल सी बात है. जब पीसीबी चेयरमैन ये कह रहे हैं और जब बाबर और रिजवान भी ये कह रहे हैं, तो इसमें कोई लीक की बात तो है नहीं. Rasika saying Kohli chasing is a treat to watch. He scores more than absolutely fantastic chaser, no doubt. Abhay Bish, is this the end of the road for Mayank Agarwal? Yeah, if he doesn't score runs soon. Again, look, he's only playing tests right now for India. And when KL Rahul comes back in, when Gill is around, Gill is fit, very tough for Mayank Agarwal to stay in the 11 when he's not been scoring runs. He had a great chance. He got that 150 against New Zealand, but then, he struggled in South Africa. He struggled here. Some bad running between the wickets. Very tough. Partha is Hanuma a like replacement for Pujara? No, I don't think he can do it just because Pujara was the better batsman. If Vihari is given the confidence and the faith of the team management कि भाई तेरे पास 1 साल है, तब शायद वो आएगा. लेकिन जब तक प्लेयर के मन में डाउट्स है, and just look at the competition. Iyer can bat at 3, Gill can bat at 3. You might see Rahul at 3. There's so many options now in this team that if Vihari does not get those 50s, his place will also slowly fade out of the team. Gaurav Pandit, Jamie bro, what are your thoughts on these pitches? If England Australia make such pitches, will crowd come to watch? What kind? You're talking about the Rawalpindi, Karachi flat tracks, the concrete roads, or you're talking about Mohali and Bangalore which spin and the match gets done in 3 days? If you can give me the exact, आपका सवाल exactly क्या है, तब मैं आपको जवाब दूंगा. Babe Bish is still around. I think one of the reasons for team success is that they enjoy each other's success and support the players, the way they gel along with each other. I mean, I think this would be fairly obvious for any team. जब तक माहौल अच्छा है team में, the players will get along. When there's any rift or there's doubts, this is for any team. It's bound to have an effect. So, yeah, I mean, you have to enjoy success. Where there's doubt, where there's competition, where there's ego, it's very tough to struggle. And I think history is littered with such examples. जय भाई, क्या ये कोहली की लास्ट टेस्ट सीरीज हो गया? अरे क्या हार्दिक भाई, क्या तुम उंगली कर रहे हो? एब्सोल्युटली नॉट. अभी 2.5-3 साल तो विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. ही इज गोना गो टू इंग्लैंड. जो एक टेस्ट मैच बाकी है अगेंस्ट इंग्लैंड, वो तो वहाँ खेलेंगे. और वहाँ ही इज डिटर्मिन्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट टीम व्हिच विन्स द सीरीज. फिलहाल हमारी टीम 2-1 से ऊपर है, बट सीरीज अब तक जीती नहीं ऑफिशियली. सो ही विल गो देयर. अब बहुत है यार, ऑस्ट्रेलिया इज कमिंग, फिर टीम बांग्लादेश जाएगी. बहुत टेस्ट क्रिकेट है, और जब तक विराट कोहली है, फिट है, खेलेंगे वो. ऐसा कुछ नहीं है कि ये इनका लास्ट सीरीज है. गौरव पंडित, रैंक टर्नर्स व्हिच एंड इन 2 days. आई प्रेफर इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज. एटलीस्ट देयर सम कॉन्टेस्ट. आई डोंट नो यार. मैं आई सेड दिस बिफोर मेनी टाइम्स. आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ स्टक रिकॉर्ड. मुझे 5 दिन का मैच देखना और वो मैच में रिजल्ट नहीं है, मुझे उसमें कोई मजा नहीं है. जब तक कुछ लास्ट विकेट टाइप ड्रॉ हो, ऐसे मैचेस होते नहीं आजकल. England West Indies it was overall for 3 days, it was a good wicket, but when you see a team batting for 70 overs, I just feel that ठीक है, I'm okay with that Antigua track. It's not bad, but it should be even. ऐसा नहीं है कि you see in Rawalpindi and Karachi जहाँ पे बैट्समैन बस डोमिनेट कर रहे हैं, और यहाँ पे बेंगलोर में जहाँ पे बॉलर डोमिनेट कर रहे हैं, with of course the exception of Shreyas Iyer and Rishabh Pant. I just think it's very difficult now for any board to put out a good even 4-5 day track, because उसमें रिस्क है कि उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर ग्रीन हो जाएगा, ज़्यादा सूखा किया तो बैट्समैन रन डालेंगे.
I still think the best wickets right now would be in Australia, consistently by and large, क्योंकि वहाँ के matches जाते हैं 5 दिन तक. We saw it when India went there. Ashes में overall matches इतने लंबे नहीं गए थे, but that's because England were just totally poor. England की बात करें, I think we saw a couple good pitches last year during the India series. Even on the tracks where batting was easy, like the Oval, Jadeja's bowling had a say in the win. Shardul could take wickets there. Umesh could take wickets. So अगर आप बात कर रहे हैं कौन से देश में जहाँ पे सबसे overall even wickets हैं, I would say Australia. South Africa में we've seen some dangerous pitches. वहाँ पे matches 3 दिन में खत्म हो रहे हैं. वहाँ पे seamers को बहुत advantage मिलता है. So overall, I don't think you'll see teams making these kind of rank turners because that backfires against their own team. Okay, Parth is saying, do you see India making it to the chess championship final? No, very very tough. It's not impossible, but very very tough for them to do it. हार्दिक भाई, जेमी भाई, आज त्रिदेव का जादू चलेगा या सीमर्स ही सेशन खत्म कर देंगे? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जहां मुझे लगा कि त्रिदेव छा जाएंगे, वहां पे शामी और बुमराह खास करके उन्होंने कमाल दिखा दिया. कुछ भी हो सकता है. शायद अगर स्पिनर्स को पहला सेशन दे तो कमाल हो सकता है. आई स्टिल थिंक अक्षर पटेल हैज टू हैव अ बिग रोल इन दिस मैच, हालांकि एक ही दिन बाकी है. बट गुड क्वेश्चन. आई थिंक द फास्ट बॉलर्स हैव डन वेरी वेरी वेल. अच्छा, Ratik saying, sorry, I didn't clarify Sachin versus Pakistan in finals. Forget Sharjah. Any other venue barring best of 3 and Dhaka? I mean, how many finals has India made? मुझे इतना याद नहीं है. देखो, जहाँ पे शारजा की बात है against Pakistan, it has been impossible for any team to beat Pakistan in Sharjah. So it's not just about how Sachin has fared. There was a time though in the from the early 2000s where India, I think they made 14-15 finals in the span of about 2.5 years, and I think they only won one of them. So India as a problem India as a team had a problem of choking in finals. But as far as your question about Sachin versus Pakistan in finals, I don't even remember off the top of my head how many finals he would have played. But I don't think if you're going to be harsh on Sachin, it was not about him, because I don't think any barring the, you rightly said, barring the Independence Cup trophy, how many finals has any India team beaten Pakistan in? मुझे तो याद भी नहीं है. एक 87 में हुआ था शारजा में, वन कपिल देव, पर I think they lost there. They lost to Chetan Sharma. They lost to Imran's team. They lost to Amir Sohail's team. मैं सोच रहा हूँ. Yeah, I cannot recall any Indian team beating any Pakistan team in any final in the UAE. So yeah, bit harsh to say that it was because of Sachin जब पूरी टीम खराब कर रही है. Okay. Abebesh, do you think Jadeja should bat higher up the order? Absolutely, he should bat at number 6. And if you want a combination sometimes, send him in 4 also. He can do the job if Virat Kohli is not around. The trio of Ashwin, Jadeja and Akshar against this fragile Lankan batting is wrong on a humanitarian level. It is, but then when Jasprit Bumrah is coming and taking 5 wickets and bouncing them out, it makes it even worse, no? Bullying, totally bullying. Okay, Virat Kohli will easily play till the age of 37, maybe lots of our T20s. Absolutely, the guy is absolutely mad about cricket, I agree. And he's had such a big role in making test cricket important again. So well done, Rasik. जय भाई, आईपीएल में कौन सी टीम का चांस है इस बार? क्योंकि अगर सभी टीम को देखते, कॉम्बिनेशन मेस्ड अप है सभी टीम्स के. अगर हम ऑन पेपर देखें तो मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस, लखनऊ, राजस्थान एंड दिल्ली हैव द बेस्ट ऑन पेपर. पर क्योंकि ये आईपीएल है, मैं हमेशा कहूंगा मेरे टॉप 2 टीम्स हैं सीएसके और मुंबई इंडियंस. 14 साल में से 9 बार तो ये दोनों टीम जीते. तो कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, पैसा खर्च, ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक सीएसके और मुंबई प्लेऑफ से बाहर है. Always my top 2 teams, Mumbai and CSK. Always. Gaurav Pandit, will they take some rank turns against Australia if there will be no contest? You mean when Australia comes here in this year? Yeah. You would probably see a couple, because I know it backfired the one time when Steve O'Keefe came and took 11 wickets. But again, Lathan Lyons on his last legs, Mitch Swepson's on debut. Australia just do not have those kind of, consistently good spinners, barring Lyon. I would not be surprised if you saw similar pitches even when Australia come. It might backfire. It might play into the hands of Stark and Cummins and Hazelwood, क्योंकि ये बहुत अच्छी तिगड़ी है fast bowling की. But India would still
take a risk and still back their own bowlers, their own spinners. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग वीक है दोस्तों. This Pakistan attack and these tracks are not testing them. India, Siraj, Bumrah, Shami, these three spinners, they will beat any visiting team that comes here. So I would not be surprised if we saw some turning tracks when Australia come in October. Parth would have loved to see Ashwin bowling to Tim Payne. Yes, he would have been good, but of course, we all know that Tim Payne was playing some other game all this while, which is why he's a former Test cricketer now. JY, no question, but possibly kindly bring Meha ma'am. Yes, I agree. आप में से बहुत ने कहा था मेहा फिलहाल है नहीं यहाँ पे. She's out of town for a week on some family work, and she's not on the channel more because she's doing her own shows for her news channel. तो वहाँ पे वो करके it's very very hard for her to also take out time here. But she's fully aware. She reads the comments. She knows that all of you ask about her. But right now बस वो combination fit नहीं हो रहा है because I work from home, she works from office. तो बहुत बहुत मुश्किल है. Plus she also helps me out once a week on my other chat show for Glance. She often does a show there because that's a half an hour show और वो टाइमिंग्स ठीक है. तो 5 से 5.5 हफ्ते में एक बार मेहा जो है जब वो दफ्तर में है वो समय निकालती है to help me on my other show. So but she will come back at some point जब भी schedule अलाउ करता है. हार्दिक पूछ रहे हैं जय भाई आपको नहीं लगता कि लेग स्पिन खत्म होती जा रही इंटरनेशनल क्रिकेट से? एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में है. बाकी वाइट बॉल क्रिकेट में अभी काफी लेग स्पिनर्स हैं जो अच्छे डाल रहे हैं. इवन द एसोसिएट टीम्स हैव वेरी गुड लेग स्पिनर्स like Namibia and Scotland, you know, they have leg spinners. And तो I think जब तक वाइट बॉल क्रिकेट है लेग स्पिनर्स का काफी अच्छा इम्पैक्ट रहेगा. लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी बहुत कम देखने को मिले. मैं बहुत कीन हूँ ये देखने के आज जो ऑस्ट्रेलिया का डेब्यूटेंट है मिचेल स्वेप्सन, द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर टू प्ले अ टेस्ट इन 13 ईयर्स. मतलब 2009 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने एक लेग स्पिनर खिलाया. Very very keen to see how he goes because there are just not enough leg spinners going around in test cricket. जी ब्रो, इंग्लैंड को रियलिस्टिकली कितना टाइम लगेगा वापस आने में? इंग्लैंड फैन ब्रो टेस्ट में यार, जब तक इनके पास इतने फालतू बैट्समैन है, आई एम शॉक के हम बचपन से सुनते हैं कि काउंटी क्रिकेट काउंटी क्रिकेट काउंटी क्रिकेट. कौन सा काउंटी क्रिकेट यार? ना तो मुझे जैक क्रॉली ढंग का, चलो जैक क्रॉली फिर भी ठीक है, वो रोरी बर्न्स तो फालतू निकला. आपने इतने स्टोनमैन से लेके कार्बरी विंस इतने सारे प्लेयर्स, अभी नया आया एलेक्स लीस. यार अगर इनका जो 4 डे क्रिकेट है काउंटी चैंपियनशिप, अगर वो इतना अच्छा है तो यार 10 साल से बैट्समैन क्यों नहीं निकल रहे? मे बी देर प्लेइंग टू मच 1 डे क्रिकेट, यू नो, द T20. आई थिंक एटलीस्ट too many T20 crickets. You've seen all their players, all the upcoming England batsmen, they're playing PSL, BBL, CPL. इनके डोमेस्टिक रन्स कहाँ हैं? तो जब तक मेरे दोस्त गौरव पंडित, आप फैन हो इंग्लैंड के, माई commiserations with you for following such a team. No, I'm just joking. But जब तक इंग्लैंड के पास बैट्समैन नहीं आएंगे इस टीम का कुछ नहीं हो सकता. You've seen it. They struggled. They lost to New Zealand at home. They lost to India. They lost in India. They lost the Ashes horribly. They might lose to West Indies. और फिर आपने एंडरसन और ब्रॉड को रेस्ट कर दिया. वो खुद कह रहे हैं कि भाई हम तो फिट हैं. इंग्लैंड की टीम काफी फालतू है दोस्त. Okay, Rasik is back. You've done some research. 1984 India won. अबे 84 की बात कहाँ करोगे यार तुम दोस्त मेरे? We won against them in World Championship 85. Yes, 85. That was a great, India's biggest achievement alongside the 83 World Cup, and beat them in Sharjah 1985. तो इन मैच में तो हमारे सचिन ने खेला भी नहीं. आप तो सचिन के पीछे पड़े हो. India won. That's the match. Pakistan 87. I had that in mind when Kapil Dev got wickets. Imran Khan got wickets, then Kapil. Again, I mean, that means from 87 के बाद किसी भी सीरीज में, especially like I said, in the UAE, पाकिस्तान को हराना बहुत बहुत मुश्किल था, बल्कि असंभव था. So again, when a team dominates like that, but then, you know, it's so weird how you look at the World Cup. India have only lost one match to Pakistan in a World Cup. That was last year, T20 World Cup. Overall, India has bossed them so regularly for over 30 years in ICC tournaments. But, you know, yeah, I don't think any Indian team would have managed to beat that Pakistan team in Sharjah. खासकर जब जुम्मे के दिन हो तो. चलिए दोस्तों, 25 मिनट बाकी हैं टेस्ट मैच के शुरू होने के लिए. मैं जाके लंच करता हूं. उससे पहले आई विल जॉइन यू अगेन आफ्टर दिस मैच. एंड अगर आप चाहते हो तो आप मेरे साथ आप ज्वाइन कर सकते हो. मैं यहाँ पे डालूंगा लिंक live.glance.com. यू कैन जॉइन मी एट 5 o'clock आज. इसी एक सेकंड मैं आपके लिए लिंक यहाँ डालता हूँ. इसी लिंक पे आज 5 बजे
I'll put the exact link up. You can join me here. ये मैंने copy paste कर दिया और ये मैंने यहाँ पे link डाला. इस लिंक पे दोस्तों जो मैंने अभी पेश किया 1 2 3, आप इसी पे 5 बजे आज आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं. मैं बात करूंगा मेरे फॉर्मर कॉलीग और दोस्त आदित्य भट्टाचार्य, हु इज द स्पोर्ट्स एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स ऑनलाइन. We'll be talking about the pitch controversy, Rawalpindi pitch, Karachi pitch and Bangalore pitch. So do come back at 5 o'clock on the link I've just pasted here. बहुत अच्छा लगा आप लोग के सवाल देख के, आपके सवाल के जवाब देके, आपसे 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 बात करके. Gaurav, I've just put the link there. See that link there? HTTPS. That's the link. And उसके ऊपर भी है live.glance.com is the website and the link is there. दोस्तों थैंक यू. मैं जा रहा हूँ लंच करने. आप भी इंजॉय करिए लंच, चाय, कॉफी जो भी आप लेंगे. और मैं आपसे मिलूंगा बहुत बहुत जल्द इसी चैनल पे पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ द पिंक बॉल टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. गुड बाय फॉर नाउ. लव यू ऑल.